Reader India EVS Class 2. Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are doing really very well. So, I, Shama Parveen, your EVS tutor, welcome you all in my today's session. In my today's session, my dear student, we are going to start the chapter number 6. Okay, and the name of this chapter is water. Okay, in this chapter, my dear students, we are going to see what is the meaning of water. Okay, and what are the uses of water. Okay, we're also going to see the sources of water, means through which we get water. Okay, and how we have to conserve our water, or how we have to save our water. So all this topic we are going to cover under this chapter. So come with me and let's start. See, as you all know, my dear students, our earth is the only planet that has water. Okay, you all know there are total 8 planets in our solar system, and among those 8 planets, earth is the only planet having water content. Okay, thus it is also called the blue planet. That's why our earth is known as blue planet. Okay, why our earth is known as blue planet? Because earth is the only planet in our whole solar system that have water content. Okay, water is essential for life. Okay, just like food, just like air, water is the essential for our surviving. Okay, we cannot live without it. We can't live without water. Okay, so for our own survival we need water along with air and food. Plant and animals also need water. See, we only human beings don't need water. हमारे साथ साथ प्लांट्स और एनिमल्स को भी पानी चाहिए. ठीक है, our all body functions depend on water. अच्छा माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है ये जो हमारी बॉडी है ना, ये मोर देन 70% पानी से बनी हुई है. ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारी जो ये बॉडी है, इसके अच्छे फंक्शनिंग के लिए वी नीड water. Okay, now my dear student, here we are going to see what are the uses of water. हम पानी कहाँ कहाँ use कर सकते हैं. So here you can see this is a picture. Okay, in this picture it is shown that in this way we use our water. So the first use of our water is for drinking purpose. This is the most important use of our water. Okay, so we use water for drinking purpose. Okay, the second is washing clothes. Here you can see this lady is washing her clothes. Okay, so for washing clothes. Cooking food. Okay, cooking food, here you can see this lady is cooking food with the help of water. Okay, now cleaning floors. Here you can see this lady is cleaning her floor with the help of water. Cleaning utensils. In this picture you can see this lady is cleaning her utensils. Okay, watering plants. Okay, here you can see this cute boy, just like you, my dear students, giving water in his plants. Putting out fire. अच्छा, कहीं आग लगती है, ठीक है, कहीं पे भी आग की इंसिडेंट हो जाती है तो पानी से ही आग को बुझाया जाता है. ठीक है, बाथिंग ऑफ एनिमल्स. एनिमल्स को नहलाने के लिए भी वी यूज वाटर. Swimming and boating. For swimming and for boating we use water. Okay, in this picture you can see the boy is washing his hand. Okay, so for washing his hand he is using water. Okay, now water is used in many factories. Okay, it is also used by farmers to grow crops. Water is used in industry as well as for agricultural purposes both. Water is used in factories as well as it is used by farmers to grow crops. Okay, now what are the sources of water? Okay, means what are the sources of water through which we are going to get water? There are many sources through which we get water. Like here you can see the first and most important source of our water is rainfall. Okay, through rainfall we get water. Okay, the main source of water is rain. Always remember, my dear student, the main source of water is rainfall. Okay, rainwater falls in rivers, ponds and lakes. जब बारिश होती है ना, तो बारिश का जो पानी होता है वो आपका कहाँ कहाँ जाता है? वो रिवर्स में जाता है, पॉन्ड्स में जाता है और लेक्स में जाता है. ठीक है,
जो बारिश का पानी होता है वो जब बरसात होती है तो बरसात का पानी कहाँ जाता है, रिवर्स में जाएगा, पॉन्ड्स में जाएगा और लेक्स में जाएगा, ठीक है। Rainwater is also collected in large tank for future use. Okay, so all the rainwater it is collected in a large tank for future use. Rainwater is the purest form of water. अच्छा, जो rainwater है ना वो सबसे प्योर वाटर होता है, इसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं होती है, लेकिन तब तक इसमें कोई इम्प्योरिटीज नहीं होती है जब तक वो जमीन पे नहीं गिरता है, ठीक है। Means the rain droplets coming from the cloud, okay, they are the most purest form of water until and unless they didn't touch the ground floor, okay. Generally farmers depend on rain to irrigate their fields, okay. All the farmers are totally dependent upon rain for irrigation purpose, okay. So here you can see river water, through river we get water, okay, lake water and pond water, these all are the sources of our water. See, water of the rivers come from the mountains. But my dear students, आपने कभी सोचा है कि ये जो रिवर का पानी है ये आता कहाँ से है, ये कहाँ से आता है? So जो रिवर का पानी होता है वो आता है आपका माउंटेन से, ठीक है। On the mountains of Himalayas, the snow melts into water. It flows down the streams. These streams join as a big river. अच्छा, here you can see the snow melting from mountain and waterfall. अच्छा, तो ये रिवर में पानी कहाँ से आता है? रिवर में पानी आता है आपका माउंटेन्स से, ठीक है। और माउंटेन्स कहाँ पे होते हैं? इन हिमालयन रीजन, हियर आई एम टॉकिंग अबाउट आवर कंट्री इंडिया, ओके। इन हिमालयन रीजन्स माय डियर स्टूडेंट, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ ग्लेशियर्स आर प्रेजेंट, okay. So when the ice of those glaciers melt, okay, it takes the form of water because glaciers are solid. When solid is converted into liquid, it becomes water, okay. So those water streams, okay, those water streams started flowing and later on they joined with big rivers, okay, and they are act as our after river act as the major source of water. Now on some mountains, rainwater collects at one place and fell down on a great speed from a distance. It is called waterfall. Here you can see the picture of waterfall. What is the meaning of waterfall, my dear students? See, waterfall का मतलब होता है, आपने देखा होगा माउंटेन एरियाज में, ठीक है, पानी ना एक जगह कलेक्ट हो जाता है, ठीक है, ये माउंटेन एरिया में होता है, सिर्फ और कहीं नहीं है, ठीक है, क्योंकि वाटरफॉल आपका ना वाटरफॉल है, मतलब पानी गिर रहा है, तो पानी कहाँ से गिरेगा? पानी गिरेगा ऊंचाई से, ठीक है, ऊंचाई पे क्या है? माउंटेन्स हैं, ठीक है। तो माउंटेन पे क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, जब बारिश होती है, ठीक है, तो पानी ना एक जगह इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, एक जगह कलेक्ट कर लिया जाता है, ठीक है, और वो कलेक्टेड वाटर एक साथ नीचे गिरता है, तो जब वो एक साथ नीचे गिरता है, उस गिरते हुए source of water को we term them waterfall, okay. Here you can see water is collected here and it is coming down, okay, it is coming down just like fall, okay. So this is called as our waterfall, okay. Now these waterfalls also join the rivers. अच्छा, ये जो waterfalls है ना, ये ultimately कहाँ जाके join होते हैं? ये rivers में ही जाके join होते हैं, ठीक है। Now there are other sources of water as well, like our wells, tube wells and hand pumps, okay. Wells, tube wells, our hand pumps, these are the major sources of getting underground water. See, these are the sources of groundwater, okay, but wells, tube wells and hand pumps are the major sources to get water from underground, ठीक है। wells are usually found in villages. गांव में कुआं होता है, ये देख रहे हो, दिस इज द पिक्चर ऑफ अ वेल, ठीक है, ये क्या होता है? कुआं है, ठीक है। तो कुआं आपको स्पेशली कहाँ मिलेगा? गांव साइड में मिलेगा, ठीक है, विलेजेस में मिलेगा। एट सम प्लेस अंडरग्राउंड वाटर कम्स आउट टू द सरफेस इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग। कहीं कहीं क्या होता है, जो अंडर वाटर पानी होती है वो बाहर आ जाती है। बहुत सारी जगहों पे माय डियर स्टूडेंट जो रेनफॉल का पानी है, जब वो अंडरग्राउंड पोर होके चला जाता है, तो कभी कभी क्या होता है, वो ग्राउंड वाटर ना बाहर आ जाता है, मतलब पानी बाहर आ जाता है। तो जो वो ग्राउंड वाटर की पानी को बाहर आता है ना, वो उसको कहा जाता है स्प्रिंग, ठीक है। तो स्प्रिंग से भी हमें पानी मिलता है, ठीक है। दीज आर कॉमनली इन हिली एरियाज, ये भी हिली एरियाज में कॉमन है स्प्रिंग का, ठीक है। सीज एंड ओशंस आर ऑल्सो द सोर्स ऑफ वाटर, बट देयर वाटर इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। सी, river, lakes, waterfalls, hand pump, wells and tube wells, the water which we get from these sources, they are very pure and they are fit for drinking purposes, but
The waters which we obtained through sea and oceans, they are not fit for drinking purposes. And why they are not fit? Because they are salty in nature. Okay, ocean water contains a large amount of salt. आप सॉल्टी पानी पी सकते हो? नहीं पी सकते ना। आपको प्यास लगी और आपको कोई सॉल्टी पानी पीने के लिए देते, आप आपकी प्यास बुझेगी नहीं ना, आपको और गुस्सा आएगा इवन। ठीक है, तो देखो जो ओशन वाटर होता है, सी वाटर होता है, इसका पानी पीने लायक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें सॉल्ट की क्वांटिटीज होती हैं। ओके, हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ अ ओशन। ओके, द वाटर ऑफ सीज एंड ओशंस इज सॉल्टी, thus we cannot use it for our day-to-day activities. Okay, the water available in sea and ocean areas, they are not fit for drinking purposes. That's why we can't use them. That's why we can't use this water for our day-to-day activities. Okay, sea and oceans are large water bodies on the earth. Okay, but the water present in sea and ocean bodies are the largest source of water for our planet earth. Due to the water present in ocean and sea areas, that's why our planet is called as blue planet. Okay, in towns and cities water does not reach at our house directly. अच्छा, हम लोग शहरों में रहते हैं। अब शहरों में तो ऐसा नहीं कि हम बारिश का पानी इकट्ठा कर रहे हैं और उससे पानी पी रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो शहरों में और बड़े बड़े टाउन्स में क्या होता है कि जो पानी है वो डायरेक्ट हमारे घर में नहीं आता है, वो काफी मेथड्स को क्रॉस करके हमारे घर पे आता है। लेट्स हैव अ लुक। वाटर फ्रॉम रिवर और लेक इज कलेक्टेड इन लार्ज ओपन टैंक्स। ठीक है, जो पानी हमें रिवर और लेक से मिलता है, ये एक लार्ज ओपन टैंक में कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, डर्ट सेटल डाउन इन अ फ्यू डेज, क्लियर वाटर एट द टॉप इज फिल्टर्ड। ठीक है, तो ये जो स्टोर्ड पानी होता है एक बहुत ही ओपन से टैंक में, यहाँ पे जब पानी स्टोर कर लिया जाता है तो उस पानी में जितनी भी गंदगी होती है, इट सेटल डाउन। ओके, जब ये सेटल डाउन हो जाता है तो ऊपर जो पानी बचता है, दैट वाटर इज क्लीन वाटर। हियर यू कैन सी इट इज अ पिक्चर ऑफ अ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स। ठीक है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। इन दिस ट्रीटमेंट प्लांट्स माय डियर स्टूडेंट्स, यू कैन सी this is a huge tank. Okay, this is a huge open tank. Okay, here waters are collected. Okay, and why waters are collected? For treatment. Okay, for removing dirt. Okay, so all that dirt settle down. Okay, and it's remain at the top level clean water. Okay, now द वाटर इज पम्प्ड एंड स्टोर्ड इन वाटर टैंक्स। ठीक है, तो ये जो क्लीन वाटर बचता है ना, इसी को हम वाटर टैंकर्स में स्टोर करते हैं। फ्रॉम दिस टैंक्स इट इज सप्लाइड टू द हाउसेस थ्रू पाइप्स, और इन्हीं टैंक से हमारे घरों में पानी आता है टैप्स के थ्रू। ठीक है, टैप्स ऑफ हाउसेस आर कनेक्टेड विद दिस पाइप्स, इट रीच आवर होम्स बाय पाइप्स। ठीक है, now save water. My dear students, we have seen there what is the meaning of water and what are the sources through which we get water, but you know what, water is a precious thing. That's why we need to save water. Okay, so here many ways are given through which we can save our water. So let's have a look. See, some of the water on the earth is fit for drinking. Okay, only some portion of the water available on our planet earth is fit for drinking. Rest of the salty in nature, they are not fit for drinking. So every water drop is precious for us. So every drop means each and every drop of water is precious for us. We need water to drink, to do various household activities. And why we need water? We need water to drink, to do our various household activities. Okay, to cultivate our crops means for agricultural purposes, and to generate electricity. Okay, there are some ways to save water, they are. Okay, so for drinking purpose, for our various household activities, for generating electricity, and for our farming purposes, we need water. So we are going to see how we can save our precious thing, means our water. So let's have a look. The first point through which we can save our water is we should not let the tap run while brushing the teeth. ये सबसे कॉमन चीज है। आप ब्रश करते हो, ठीक है, आप ब्रश करते जा रहे हो, लेकिन आपने क्या किया? आपने टैप का वाटर खुला छोड़ दिया। तो क्या वो अच्छी चीज है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, क्योंकि आप ब्रश कर रहे हो उतने टाइम पे कंटिन्यूअसली अगर पानी वेस्ट हो रहा है तो वो क्या है? वेस्टेज ऑफ वाटर ही तो है। इसीलिए जब भी आप ब्रश करोगे कभी भी टैप वाटर खुला मत छोड़ो।
ठीक है। सेकेंड है वी शुड यूज बकेट वाइल बाथ, ओके। आप जब नहाते हो ना, ऑलवेज यूज बकेट एंड मग फॉर बाथिंग पर्पसेस, ओके। डोंट टेक बाथिंग डायरेक्टली फ्रॉम द शावर्स, ठीक है। शावर में नहाना सबको पसंद है, लेकिन हमें नहीं नहाना चाहिए, बिकॉज द वाटर कमिंग फ्रॉम द शावर्स आर वेस्टेड, ओके। बट if we use for bathing purpose a bucket and mug, then we are we are going to save water from wastage. We should not spoil water, हमें पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए. Rain water can be stored in the tanks, drums and buckets. बारिश होती है, हम सब लोगों को क्या करना चाहिए, अपने घरों में रेन वाटर को हमारे घर में टैंक भी होता है, अगर टैंक नहीं है तो ड्रम्स होते हैं, बकेट्स होते हैं, इन सब में हमें रेन वाटर को सेव करना चाहिए, बिकॉज रेन वाटर इज द मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ water. So my dear student, this is all in this chapter, okay. So come with me and let's have a quick recap of this chapter which we learned through this chapter. See, water is the very important source for our life, okay. Everything needs water for their survival, even plants, animals and we human beings, we all need water for our own survival. The earth is the only planet in our solar system where a plenty of water is available. That's why life is only possible on planet Earth. We use water for drinking and taking bath. Rain is the main source of water. Seas and oceans are also the sources of water, but their water is not fit for drinking because the water present in sea body and ocean bodies are salty. Okay, so these all are the points which we have seen in this chapter. Okay, now my dear students, revise this chapter, okay, and complete the exercise based on this chapter. Okay, now I am taking leave and going to meet with you all in my next session with a new chapter. Till then, take very good care of yourself. Bye.